and welcome to Kashmir Now. I'm your host Lipakshi. Let's see what we have lined up for you this week. Delegates extol beauty of Kashmir in G20 meeting in Srinagar. Demonstrations held in illegally occupied Gilgit-Baltistan over poor wheat quality. People in illegally occupied Gilgit-Baltistan suffer from water crisis. Road construction between Kotranka and Kavas underway in Rajouri. And in our special section of Incredible India, let's get you on board on the Bilimora-Waghai narrow gauge train to witness a beautiful journey across the Saputara hills in Gujarat. In a rapidly changing world marked by tectonic shifts in the world order, India's emergence as a key player in world affairs, particularly in the global south, has redefined her prominence to truly become a sovereign, decisive and self-sufficient state that is not merely confined to the category of a developing nation at the behest of others. The G20 presidency, which is being dubbed as one of India's most remarkable diplomatic achievements till date, has greatly added to its reputation. Recently, a G20 meeting was hosted in Jammu and Kashmir in line with several scheduled G20 events across India. Have a look. India assumed the G20 presidency in December 2022 and is now hosting over 200 G20 meetings in over 50 cities. The Union Territory of Jammu and Kashmir is one among them. The third G20 Tourism Working Group meeting was recently organized in the Union Territory of Jammu and Kashmir. The G20 brings together the world's leading economies having more than 80% of the global GDP on one platform to exchange dialogues on matters of global concerns and strategic partnerships. The G20 Tourism Working Group meeting aims to strengthen economic growth and preserve cultural heritage to bolster India's cultural identity and tourism potential to the world. We appreciate very much the efforts made by the government of India to make this region safer and more secure. During the last 4 or 5 years, I discovered that the Indian government made tremendous efforts to make this place safer. And this kind of G20 meeting in Srinagar, Kashmir, will be very much helpful for the future tourism for Jammu and Kashmir, this region. The G20 delegations arrived at Sheikhul Alam International Airport in Srinagar as the mega event began. About 60 foreign nationals from over 27 countries and industry stakeholders participated in discussions on green tourism, destination management, ecotourism and the use of films to promote tourism, economic growth and cultural preservation. The G20 meeting proved to be the first major international event to be held in the Union Territory of Jammu and Kashmir since it received Union Territory status after the abrogation of Article 370 in 2019. I've heard so many good things about Jammu and Kashmir, how beautiful it is, but now that I came here and get to experience myself, it's just stunningly beautiful. So this opportunity to host third tourism working group meeting here in Jammu and Kashmir will be an opportunity to showcase the world how beautiful it is and also how peaceful it is, unlike some people's concern.
During the three-day event in the valley, the G20 delegates visited Dal Lake and experienced shikara rides and was seen visiting the historical Polo View Market amid light rain on the third day of the meeting. The delegates also visited the Art and Craft Bazaar organized by the state government, showcasing local handicrafts by local artisans, signifying the role of community participation. For Jammu and Kashmir, the G20 event will mean a significant flux of tourism and a boost in the economy of the Union territory. It opens new doors and opportunities for the people of Kashmir and India as a whole to emerge as a global leader. Very, very beautiful experience. Love it here. Even though the rain, there's a little bit of rain, but we really liked it a lot. Beautiful, heaven on earth. We did a lot of shopping today. We intend to continue. So I think pure beauty of Kashmir and many unique products. Tourists around the world should visit Kashmir. You got a beautiful place in here, and you have Srinagar and all around the place. So people that is coming here to get to see the whole thing. So they have multiple experience. They get to taste the gastronomy and everything. Oh, it's great. People here are really nice, and you've got an incredible infrastructure. So people should come. Under a committed Modi government, India has risen to prominence on the international stage through diplomatic and economic endeavors and strong leadership. Summits and conferences are held to address unique challenges countries face, while also fostering cooperation and development. In the context of Jammu and Kashmir, the G20 Tourism Working Group meeting will bring about the socio-economic transformation in the valley. Protests and demonstrations against the government are not an unusual sight in illegally occupied Gilgit-Baltistan. People are constantly criticizing the government to look into the issues, but to no avail. Residents of illegally occupied Gilgit-Baltistan recently held a demonstration for poor wheat quality and load shedding, which has been a major source of concern for them. Take a look. A large number of locals took to the roads in Pakistan-occupied Gilgit-Baltistan against government's negligent attitude and failure to provide food security to the people. Already boiled over the subsidy cut on wheat, locals are now simmering with anger as the limited supply is being sold as bran and at high costs, making it impossible for those in need to acquire it. Moreover, the wheat that is available is of extremely poor quality. यहाँ के अवाम को मजीद इससे ज्यादा इम्तिहान में न डाला जाए, मजीद इनके हौसलों से खेल न खेला जाए। हम सब इंशाअल्लाह मिलकर इन इलाकों के अंदर चाहे पानी का मसला हो, चाहे बिजली का मसला हो, चाहे जमीनों का मसला हो, चाहे गंदुम का मसला हो, हम ये भी कहना चाहेंगे वफाक से कि आप लोग हमें चंद बोरी गंदुम देके हम पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, इसलिए चोकर हमें खिलाना बंद कर दो। चोकर खाने के मजीद और वो चोकर भी महंगा हो रहा है और वो भी गरीब के दस्तरस से बाहर है। आज हम यहाँ से ये मुतालबा करेंगे, ये चोकर बंद करके आवाम को गंदुम दी जाए। People say whenever the central government comes up with any policy or scheme, it never keeps the people of Gilgit-Baltistan in consideration. Hence, they either remain completely deprived of the benefits or are left with just residue to manage. Numerous protests and demonstrations against poor wheat quality and subsidy cuts have taken place in the past, but the residents and their hardships have received little attention from the authorities. Wheat is the key component of the people's food basket
in illegally occupied Gilgit-Baltistan, and depriving them of this staple can have catastrophic consequences. नहीं भाई, चोकर बहुत महंगा है, चोकर नहीं खिलाया जा रहा है। इसमें हमारे यहाँ मिल्स की गलती भी नहीं है। यहाँ हमारी लोकल गवर्नमेंट इस वक्त जो मौजूद है, यहाँ पे इवन हमारी मिनिस्टर्स, जो फूड मिनिस्टर जो इस वक्त इसके आटे की तहसील में जो इनका बहुत अहम रोल होता है, वो हमें वो आटा वहाँ से क्यों ऐसा आटा दिया जाता है जो हमारी मिल्स में जब पीस के हमारे पास आता है तो बिल्कुल ब्लैक, जो खाने के काबिल नहीं होता है, जो अपने माल मवेशियों को तक साफ नहीं करा सकते। ये आटे की तहसील जो जहाँ से हो रही है, जहाँ से इसका सप्लाई पॉइंट है, उस हमारे से हमने कभी डिस्कशन नहीं की। हमें ये कहा जा रहा है कि हमें चोकर खिलाया जा रहा है, चोकर खिलाया जा रहा है, पैसे हमारे पूरे लिए जा रहे हैं। सब्सिडी की रकम में जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे रही है वो पूरी दे रही है। कहाँ जा रहा है ये पैसा? Having reached saturation point, the people of illegally occupied Gilgit-Baltistan have started demonstrating intensively against the corrupt practices of the government. However, Pakistan, on the contrary, has ensured that people in this illegally occupied region continue to rule under its misrule that aims to keep the region underdeveloped while benefiting from its rich resources. Moving on, while governments around the world are investing in the growth and development of their people, the government in the illegally occupied Gilgit-Baltistan cannot even provide the basic necessities required to lead a healthy life. The locals' lives in Skardu have come to a standstill as they are afflicted by a water crisis. We have a report. People in the illegally occupied Gilgit-Baltistan are leading their lives in absolute distress as they struggle to meet their water needs and carry out day-to-day activities. They say there has been a continuous water shortage for the past 5 days, and yet the authorities have done nothing to resolve the issue. This is not the first time they are suffering at the hands of an apathetic government. For decades, they have been struggling with issues like shortage of water, load shedding, and food insecurity. महकमा गफलत कर रहे हैं जी। यहाँ 5 दिन से कोई एक कतरा पानी नहीं है। ठीक है, इन्होंने कहा था कि हम आप लोगों को दिन में 24 घंटे में 1-2 घंटा देंगे, लेकिन वो 1-2 घंटा भी ये लोग नहीं दे रहे। यहाँ आप देखें एलजाइडी में अभी 2 पाइप इन्होंने ऐसे ही छोड़ा हुआ है। पानी आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, नहीं हमारे लिए 5वां दिन है, एक भी कतरा पानी नहीं आया है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? एहतजाज करेंगे, रोड पे निकलेंगे। इसके बावजूद भी पानी नहीं है। ना आरिफ फोन अटेंड कर रहे हैं, ना अवसर। बहुत सारे वादे किए थे, सब झूठा वादा है। Even though the area has a number of power plants and a steady supply of river and rainwater, the local authorities have failed to give the population a proper water supply. Even after numerous complaints, the authorities have kept their eyes closed. This situation is not just prevalent in Skardu, but across various areas of illegally occupied Gilgit-Baltistan. सर, ये तो नाइली तो इंतज़ामिया की है और जो हमारे अहदेदारान हैं उनकी है, क्योंकि देखिए पानी नहीं आ रहा आम बंदे का मसला है तो उसके लिए है, लेकिन असल में इशू ये है कि ये लोग पीछे इसके लिए कोई, अब जिस तरह घर में अगर आप पानी नहीं आ रहा है टैंकर मंगाते हैं ना, तो अब ये पूरे शहर में पानी नहीं है तो इन्होंने कोई इसके लिए कोई प्रोजेक्ट वगैरह ये इन्होंने वो नहीं किया है। अभी आगे भी कोई नज़र नहीं आ रहा है, अभी भी नाइली है और आवाम को चाहिए इस चीज़ पर भरपूर एहतजाज करके लोगों को इस चीज़ का शऊर दिलाया जाए कि इसके ऊपर कोई ना कोई प्रोजेक्ट लें। अभी शतोंग नाले के ऊपर बात होती है तो उस पर कोई काम तो अभी तक चल नहीं रहा। तो जब तक इस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं बनेंगे तो मसाइल होंगे। पानी होने के बावजूद आपके घर में पानी नहीं है।
The local residents have been for years clamoring over water woes, but the government that works only under the commands of Islamabad seems to be least interested in even taking cognizance of the issue. A well-connected network of roads and railways is necessary for the development of any region. Authorities in Jammu and Kashmir have launched several projects to make sure that even the most far-flung areas of the territory have road connectivity. The Kotranga-Khwas Highway connects Kotranga to Kalakot in Rajouri. The road construction work for enhancing connectivity between Kotranga to Khwas under the Rajouri Mega Road Construction Project is ongoing in Jammu and Kashmir, which will boost connectivity in the region. Take a look. For a nation to truly achieve landmarks in progress for its people, it must ensure that the development efforts reach the grassroots. Considering the same, road construction projects are underway across several villages in the Rajouri district. A mega road project that connects Kotranga and Khwas to Kalakot is currently being carried out in the Rajouri district of Jammu and Kashmir. The total length of the Kotranga-Khwas road will be 30 km with a total budget allocated of 68.10 crores. It will directly benefit the 1 lakh people living in the surrounding villages of the Rajouri district. मेरी उम्र से पहले ही ये रोड का काम शुरू हुआ था, तो हमने इतनी मुश्किलें देखी। हमने 25-30 किलोमीटर अगर कोई बीमार हो जाता था तो यहाँ से उठा के बकोरियल जाना पड़ता था। तो हम इस गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आज हमारे लोगों के लिए बहुत मुश्किल की वजह से जो परेशानियां थी उनको दूर करके रोड की बहुत अच्छी जो क्वांटिटी है बनाई है, अच्छा काम किया है। मैं सीडी गुप्ता जी का शुक्रगुजार हूँ जो अच्छे ठेकेदार मिले और अच्छा काम इन्होंने 16 किलोमीटर तक हमें कोई भी रोड की जो दिक्कत है वो नहीं है। With the construction of roads in the region, people believe that they will soon be able to access schools, hospitals and workplaces easily. According to the locals, the construction of roads will make their day-to-day activities easier, as with poor road connectivity, they had to face many difficulties. इस रोड की लेंथ जो है वो 30.2 किलोमीटर जो है ये है, जबकि इसकी सैंक्शन कास्ट जो है 76.20 करोड़ और अलाटेड अमाउंट जो है वो 68.10 करोड़ है। तो इसमें जो ये रोड है ये जो है ख्वास तहसील को, कोटरंगा तहसील को, दोनों तहसीलों को आपस में कनेक्ट करती है और जिससे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है वो भी कवर होता है। तो मोर ओवर ये जो रोड है ये 63 एरिया जो है डिस्ट्रिक्ट रियासी का वो बीआरओ की रोड है जो ख्वास से मिलती है और ये उसको भी कनेक्ट करती है। तो इसमें पॉपुलेशन का जो रहा तलब तो वो हमारी अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख के आसपास आबादी है, जिसमें दूर दराज एरिया है, ओदन है, गाईबास है, नारला बमल है, बेईनमल है और नंगथुब है। तो इस रोड की वजह से ये जो पूरा एरिया जो है इन पूरे एरिया को इसका बेनिफिट जो है वो इसको बेनिफिट मिला इस रोड की वजह से। ये तहे दिली से गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम रोड की वजह से आज़ाद हुए। बहुत खस्ता हाली थी जो हमने बताई है कि बता नहीं सकते थे कि जो मजबूरियां थी, बच्चे खस्ता हाल थे, यहाँ डिलीवरी होती थी वो उठा के जानी पड़ती थी कंधों पर, बड़ा मुश्किल था। रोड की वजह से जो हमारी सारा कारोबार है वो अच्छा चलेगा। बिजनेस हमारा ये रोज़गार, गाड़ियाँ चलेंगी, रास्ते यहाँ होटल खुलेंगे, हम इस चीज़ की हमारा रोज़गार बढ़ेगा। हमारे जो एक दूर दराज बैकवर्ड एरिया था तो रोड के साथ कनेक्टिविटी के साथ सब कुछ है, डॉक्टर भी आएंगे, स्कूल भी चलेंगे, सारा कुछ रोड के साथ है और हमें रोड की बहुत खुशी है। Connectivity is not only a key component of development but also a key ingredient in ensuring poverty reduction. Good road connectivity adds to the socio-economic transformation of any place as it allows new opportunities, people and ideas to usher in an era of change.
Post the abrogation of Article 370, Jammu and Kashmir has witnessed impeccable progress in its status road connectivity. डिस्ट्रिक्ट राजौरी में जो मेन इश्यूज थे वो थी कनेक्टिविटी को लेकर जो इश्यूज थे वो ऑनरेबल एलजी साहब ने उन पे एक डिटेल में उन पे डिस्कशंस करी और उसके बाद हर सेक्टर में बोला गया कि रोड्स बनाई जाए। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था वो था कोटरंगा ख्वास रोड, जो प्रेजेंट एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से उसमें एक रोड बनाया गया है जिसका नाम के रोड कोटरंगा ख्वास रोड है, जो कोटरंगा से शुरू होता है, ख्वास होता हुआ जो कालाकोट तक पहुंचता है। इस रोड के कारण जो है डिटेल काफ़ी अच्छा जो लोगों को जो फ़ायदा पहुंचा है। The improvement of connectivity, especially in the rural areas of the Union Territory, will not only link people living in the far-flung areas to the mainstream, but also improve their living conditions by giving a boost to more business activities. Infrastructure development and road connectivity are the basis of any economy, and the Jammu and Kashmir government is doing a remarkable job in providing their people with good connectivity. Well, India is blessed with varied topography, beautiful flora and fauna and picturesque views, which has made it one of the most desirable tourist destinations in the world. Today, we'll take you on a journey to experience the best of nature with the Bilmora-Waghai narrow gauge train in Gujarat. Running between Bilmora in Navsari district to Waghai, the train crosses dense forest and the Saputara hill range, leaving the passengers spellbound. India has emerged as one of the biggest tourist destinations around the world. From age-old architectural marvels to lush green forests, each region in the country offers a one-of-a-kind experience to all travel buffs. Running for the last 111 years, the Bilmora-Waghai narrow gauge train has always been a center of attraction for tourists. The train runs between Bilmora in Navsari district of Gujarat to Waghai in the southern part of Gujarat and provides a breathtaking view of dense forests, lush green flora and brooks. अभी ये जो मौसम बहुत अच्छा है और दिस इज द बेस्ट रूट है जिससे हम ट्रैवल कर सकते हैं और अराउंड द नेचर, क्लोज टू नेचर हम रह सकते हैं और डांग की जो पूरी खूबसूरती है वो इससे हम देख सकते हैं कि क्या है। ये ट्रेन के बारे में पहले हमने नहीं सुना था, पर एक मैगजीन आता है जिसमें हमने पढ़ा था इसके बारे में, इसकी जर्नी के बारे में और कैसे ये कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है और कितना नेचर होता है वो सब, तो एक मैगजीन के थ्रू हमें पता चला था। ये अर्बन सेंटर से आते हैं तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस व्हाट इज हैपनिंग हियर। आई मीन दिस इज ग्रीन पैच, नॉर्मली यू डोंट सी एनीवेयर, very few tracks are like that, and first time this vista, I don't know, this narrow gauge and vista, it's a new combination, so it's good, impressive. The train passes through the picturesque views and the Saputara hill range and leaves the passengers spellbounded. During monsoon, when the sky is covered with blue clouds, the train passes through a bridge, providing a mesmerizing view for the passengers to remember. The 62-kilometer track of this route was laid by the British at the instance of the Sayaji Rao Gaikwad in 1913. It was to be a part of Gaikwad's Baroda State Railway, the railway line owned by the princely state of Baroda, ruled by the Gaikwad dynasty. The train passes through a total of 9 stations, including those of Gandevi, Chikhali Road, Kala Amba, Unai, Dholi Kua and more. Passengers and tourists rejoice the journey as they take their time out from the urban lives of relishing the beauty of nature. बहुत बढ़िया है, अभी मैं आने वाला है उससे पहले बहुत बढ़िया है। मैं कोविड पहले से प्लान कर रही थी ये ट्रेन में आने के लिए, तो मुझे बहुत ऐसे है कि नहीं मैंने जाना है। मैंने YouTube देखा, फिर सब लोग का फोटोज देखा,
तो वही से मुझे ऐसा है कि नहीं, मुझे ये ट्रेन में मुसाफरी करनी है और मुझे एंजॉय करना है मेरे फैमिली के साथ। तो एटमॉस्फेयर आज बारिश का है तो बहुत बढ़िया है। क्या है कि बारिश आ रही है, मैंने बहुत सारे फोटो खींचे, फैमिली के साथ है, ब्रदर सिस्टर है, पेरेंट्स है, बाहर बहुत बढ़िया सीनरी आ रही है, तो बहुत बढ़िया है यार। एटमॉस्फेयर तो बहुत बढ़िया है, बारिश भी बहुत, मौसम बहुत बढ़िया है। In order to add to the experience of the passengers, the train includes an air-conditioned Vista Dome coach for spectators to enjoy the beautiful views in a much comfortable way. लोगों के पास से भी सुना कि ये ट्रेन में सफ़र करने वालों की संख्या अभी बढ़ गई है। बढ़ गई इसलिए कि उसका न्यूज़पेपर में, चैनलों में जब न्यूज़ आया तब से लोगों को जिज्ञासा हो गई। अभी ये एक कोच लगता था, आज 2 कोच लगाए हैं। लोग सैटरडे संडे एवरी यहाँ प्रवास करते हैं। हमें भी इच्छा हुई हमारे दोस्तों के साथ में, हम देखो आज पूरा कोच भरा हुआ है हमारे दोस्तों के साथ में, तो हम इसमें सफ़र कर रहे हैं, देख रहे हैं हम तो ग्रीनरी, मोर दिख रहे हैं, सब आजू बाजू में, बहुत मज़ा आ रहा है। Apart from serving as a big tourist attraction for the scenic beauty of the area, the train is also an important means of transport for local tribals for transporting their elegantly crafted bamboo works. Well, that's all we have for you in this week's episode. Goodbye and take care.